time is around 6:50 in the morning, and being a Sunday, I'm on my way to clock some kilometers on my motorcycle, because motorcycle and Sundays is equal to happiness. Oh man, here's the exhaust. तो मेरा लास्ट ब्लॉग था, मैंने उसमें देखा, उसमें भी काफ़ी विंड नॉइज आ रही थी, तो मैंने अभी 5th टाइम अपना सेटअप चेंज किया है, माइक का उसकी पोजीशन चेंज की है। अब मैं होप कर रहा हूँ कि सही आए आवाज़ वगैरह, क्योंकि अगर अभी भी आवाज़ सही नहीं आई तो फिर शायद मुझे कंसिडर करना पड़ेगा हेलमेट चेंज करने का। मतलब हेलमेट है मेरे पास घर पे एक और स्टील वर्ड का, बट आई डोंट लाइक इट बिकॉज खाली ISI सर्टिफाइड है वो। स्टार्टिंग में लिया था वो, मतलब इधर उधर जाने के लिए मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ, पर वैसे नहीं। ये रॉयल इनफील्ड का जो अपर ट्रूपर हेलमेट है थोड़ा MX स्टाइल है, थोड़ा कूल दिखता है, रेट्रो बिल्कुल। बाकी ये तो अब एडिटिंग करते समय पता लगेगा कि इस बार भी कुछ हुआ है या पिछली बार जैसी क्रैकलिंग पॉपिंग साउंड्स आएंगी कि नहीं आएंगी। बाकी हाँ, आई एम ऑन वे टू सोना हिल व्यू पॉइंट, which is the highest point in Gurugram. ऑलमोस्ट पूरी सिटी दिखती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, सोना पोर्ट के पास है वो। एंड इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड, आई एम वियरिंग माई न्यू रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर V3 जैकेट, which is super duper comfortable while riding. If you guys want a review on it, please comment down below. I'll surely make a video on that. Left to the Sunset Boulevard Road. Sewer. अब तो यार सुबह हवा चल रही है, जैकेट में भी गर्मी नहीं लग रही है। वैसे अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, गर्मी लगनी चालू होगी अभी थोड़ी देर में। क्योंकि घर में लग रही थी जैकेट पहन के, जब मैंने सुबह निकाली थी। पॉपिंग क्रैकलिंग साउंड ना है अभी हो। बट लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। मुझे तो अकेले जाना ही पसंद है यार, कहीं भी किसी के साथ मत जाओ, वो अलग बंदा परेशान है, यहाँ नहीं रुकना वहाँ नहीं रुकना। मतलब अपनी मर्जी से जाओ, जहाँ रुकना है वहाँ रुको। तो वी हैव जस्ट एंटर्ड द गुड़गांव फरीदाबाद रोड।
बाइक नहीं दिख रही आज तो। आगे बढ़ता है तो पता है कि यहाँ से हमको एक राइट लेना पड़ेगा राजस्थान that's a Honda Goldwing approaching. Downhill, go slow. Yeah, man, this road is completely static as well. To handle my lame jokes, guys. Why I feel like that I have taken the wrong right. Let me check. So I'm going right. Thirty-one kilometers left. Countryside Avenue. Okay. Let's go. So yeah, we are going on the right road. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. That was embarrassing, bro.
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सब गुड़गांव में भी मिलेगा, तो गुड़गांव के आसपास मिलेगा। इधर ट्विस्टीज मैम, ये जगह मेरे घर से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर्स है, बट यार टोटली वर्थ इट है एक ना एक बार आने के लिए। अलवर वाले हाईवे से आना पड़ता है, जो अलवर हाईवे जाता है। It is. This is the Sohna viewpoint. तो मैं अभी सोना गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव के हाईएस्ट पॉइंट में सोना फोर्ट की तरफ। गूगल पे इस जगह को सोना हिल व्यू पॉइंट बोला गया है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा गुरुग्राम दिखता है। ये मेरे घर से अराउंड 55-56 किलोमीटर्स पड़ता है, बट आना बिल्कुल वर्थ इट है। ये देखो, ये फोर्ट की दीवार का एक टॉम टाइप का है ये, जैसे मतलब जहाँ से देख सकते थे हम लोग। तो मैं अभी उधर हूँ और सी द व्यू गाइस। आगे का आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्लाउडी हो रहा है उधर। और सबसे अच्छी बात यह है, आज का मौसम बहुत अच्छा है यार। हवा चल रही है ठंडी, मतलब जैकेट पहन के भी गर्मी नहीं लग रही। सबसे अच्छी बात यह है। और बाकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, विच इज़ @greasemonkey6552। सो whatever. Please, I want to reach 1 million.